Wow! Download Zindagi app now. Simply Sufficient. टायर मजबूत, सफर महफूज। थम सके ना जो बने वो तूफान, आजा बने वो तूफान। सारा खून पसीना और ये जान जुनून के नाम। जिंदगी से अपनी सेविंग्स म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, बेस्ट रिटर्न पाते जाओ। इन्वेस्टमेंट इतनी सिंपल। वाओ! डाउनलोड जिंदगी ऐप नाउ। KNN's लाया आपके लिए होम स्टाइल कोफ्ता, घर जैसी रिवायती लज्जत के साथ सेफ एंड हेल्दी चिकन। KNN's जर्मन टेक्नोलॉजी वाले सर्विस टायर्स लगवाओ, क्योंकि ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। आज गली में क्रिकेट तो कल स्टेडियम की विनिंग विकेट। ऐसे टैलेंट को बढ़ाने में साथ दे रहे हैं हम थ्रू द एंग्रो क्रिकेट कोचिंग प्रोजेक्ट। और किसी पे नजर क्यों जाए? केयर हनी लोशन। थम सके ना जो बने वो तूफान, आजा बने वो तूफान। सारा खून पसीना और ये जान जुनून के नाम। डायमंड टायर, पाकिस्तान का सबसे मजबूत टायर, जो आपको दे महफूज सफर। With new Blesso Bleach Cream, पाव सितारों जैसी ग्लो। हमारा रहबर सबसे बेहतर। Zong Weekly Pro लगाएं और डिजिटल हो जाए। 40 GB डेटा, 250 अदर नेटवर्क मिनट्स, सिर्फ 399 रुपए में पूरा हफ्ता। Zong 4G। इसी मैच में तो मुझे आउट किया था नसीम शाह ने। नहीं, इनके लिए तो नसीम शाह से आउट होने की सीधी सादी खुशी है। मैं इसका एक पिक्चर लूंगा। Seamless, effortless, contactless. Tap into convenience with GS credit cards. और किसी पे नजर क्यों जाए? केयर हनी लोशन। KNN's, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। आज शतरंज की बारी, कल जीत की बाजी। ऐसे टैलेंट को बढ़ाने में साथ दे रहे हैं हम थ्रू द एंग्रो माइंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम। Enjoy 40% off on Fridays, Saturdays and Sundays with GS credit cards on Food Panda. 40 से ज्यादा ममालिक में एक्सपोर्ट होने वाला पाकिस्तान नंबर 1 एक्सपोर्ट टायर ब्रांड सर्विस। ओमेगा लेगोना फैसलाबाद जल्द आ रहा है। थम सके ना जो बने वो तूफान, आजा बने वो तूफान। सारा खून पसीना और ये जान जुनून के नाम। ओमेगा इनक्लेव फैसलाबाद जल्द आ रहा है। और किसी पे नजर क्यों जाए? केयर हनी लोशन। जिंदगी से शेयर्स खरीदो और बेचो, प्रॉफिट बनाओ, पैसे कमाते जाओ। स्टॉक ट्रेडिंग इतनी सिंपल। वाओ! डाउनलोड जिंदगी ऐप नाउ। सर्विस कहाँ है? सर्विस ही तो ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। Zong Weekly Pro लगाएं और डिजिटल हो जाए। 40 GB डेटा, 250 अदर नेटवर्क मिनट्स, सिर्फ 399 रुपए में पूरा हफ्ता। Zong 4G। KNN's, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। टायर मजबूत, सफर महफूज। ओमेगा रेजिडेंशियल झंग जल्द आ रहा है। स्टेट लाइफ गोल्डन इंडाउमेंट प्लान, सिर्फ 7 साल की अदायगी पर पाएं 20 साल का तहफ्फुज़। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। जो कैनन इलेक्ट्रिक वाटर हीटर लगाते हैं वो बांटने से नहीं घबराते हैं। With new Blesso Bleach Cream, पाव सितारों जैसी ग्लो। सर्विस कहाँ है? सर्विस ही तो ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। नेमत कुकिंग ऑयल, क्योंकि नेमत कुकिंग ऑयल से बना हर खाना है अपनायत और ग़िज़ायत से भरा। नेमत कुकिंग ऑयल, क्योंकि नेमत से जिंदगी। अपनों की रैलीज पे रहें, एक कॉल पे मौजूद, ताकि मुस्कुराते रहें पाकिस्तानी, खुशहाल रहे पाकिस्तान। KNN's Zong Weekly Pro लगाएं और डिजिटल हो जाए। 40 GB डेटा, 250 अदर नेटवर्क मिनट्स, सिर्फ 399 रुपए में पूरा हफ्ता। Zong 4G। हमारा रहबर सबसे बेहतर। जिंदगी से अपनी सेविंग्स म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, बेस्ट रिटर्न पाते जाओ। इन्वेस्टमेंट इतनी सिंपल। वाओ! डाउनलोड जिंदगी ऐप नाउ। ओमेगा विस्टा लाहौर जल्द आ रहा है। आज स्कूल में प्रैक्टिस, कल स्टेडियम में गोल।
ऐसे टैलेंट को बढ़ाने में साथ दे रहे हैं हम थ्रू द एंग्रो फुटबॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम। और किसी पे नजर क्यों जाए? केयर हनी लोशन। डायमंड टायर, पाकिस्तान का सबसे मजबूत टायर, जो आपको दे महफूज सफर। Enjoy 40% off on Fridays, Saturdays and Sundays with JS credit cards on Food Panda. आज स्कूल में प्रैक्टिस, कल स्टेडियम में गोल। ऐसे टैलेंट को बढ़ाने में साथ दे रहे हैं हम थ्रू द एंग्रो फुटबॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम। और इस मोहब्बत को हमेशा अपने अंदर कायम रखना, इसी का नाम तो सूफी है। सूफी जो नाम है एतमाद का। थम सके ना जो बने वो तूफान, आजा बने वो तूफान। सारा खून पसीना और ये जान जनून के नाम। With new Plesso Bleach Cream, पाव सितारों जैसी ग्लो। आज शतरंज की बारी, कल जीत की बाजी। ऐसे टैलेंट को बढ़ाने में साथ दे रहे हैं हम थ्रू द एंग्रो माइंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला मोटरसाइकिल टायर, ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। Nestle Fruta Vitals Sparkling Fruit Drink, the delightful fusion of soda and fruit juice. वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं पोस्ट मैच ऑन गेम ऑन है। अनफॉर्चुनेटली इट वाज अ डबल हेडेड टुडे, बट यस, obviously more than the teams, it's the rain playing and having its impact on to the points table as well. So we in fact had the luxury of the time, you know, हमें वक्त मिला तो हम चाहते थे कि जितने भी लोग जो देखने वाले हैं उनके लिए कुछ ऐसी गुफ्तगू इन लेजेंड से हम करें जो आपके लिए भी कलीदी किरदार अदा करे, जिसमें राशिद भाई ने एक और भी बात बताई है जो हमारे व्यूअर्स पर्सपेक्टिव से हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में ग्रिप्स के हवाले से बात करें, बेसिक्स के ऊपर ज़रूर बात करें। लेकिन पाकिस्तान की कल की हार के ऊपर मैं ज़रा दोबारा बात करना चाहता हूं कि उसमें एक जो वजह हमें नज़र आती है वो रनिंग इन बिटवीन द विकेट, स्ट्राइक रोटेशन विच वाज लिटिल डिफिकल्ट। अगर हम डेथ ओवर की तरफ भी बढ़ते हैं जहां पे हमें कम स्कोर चाहिए था, डिलीवरीज भी इनफ थी, लेकिन हम नहीं खेल पाए। हफीज भाई से हमने रिक्वेस्ट की है, वी टेकन आउट वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ विराट कोहली एंड वी वांट टू शेयर इट फर्स्ट एंड देन वी आर गोइंग टू आस्क हफीज भाई से मैं पूछना चाहता हूं, एक नंबर वन के ये जो स्ट्राइक रोटेशन है, रनिंग इन बिटवीन द विकेट है, कैसे बेहतर हो सकती है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, और क्या पाकिस्तान सेमीज तक पहुंच सकता है? दो चीजें पूछना चाहता हूं। दोनों सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। पहले इनिंग्स दिखाते हैं आपको विराट की। वेरी सिंपल फॉर मी। एनीवे मैं बात करना चाह रहा हूँ उस इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर जो कि सम टाइम हम लोग नहीं डिस्कस कर पाते। वी डिस्कस अ लॉट ऑफ टाइम रिगार्डिंग बैटिंग, बॉलिंग एंड द फील्डिंग, लेकिन वन इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज वेरी वेरी क्रूशियल, दैट इज रनिंग बिटवीन द विकेट, और मैं उसके ऊपर आज बात करना चाहता हूँ। सर जरूर। And please add value all my three coaches into it because I will share my idea. भी दिखा रहे हैं सर। इसके लिए पहले मैं इसको इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि look at the run they ran during these two runs. इसमें very importantly as a player, first of all, like as a batter, you play and you judge that either it's a 1 or 2 or 3, and then a loud call is something like we all miss sometimes, because I learned that from a great Zahir Abbas, and he used to say, like when he was with us, like if you call loudly you feel more confident and your nerve goes away, and you basically give a right message to your partner, which is also a very very important part while running between the wicket, because all I wanted to touch three areas. Number one, when you play the ball, you judge. It's you who judge that either it's a single or 2. And then you pass that message to your partner that it's a 1, it's 2, 3. And then you wait for your partner to respond. तो अगर that is very very important. अगर मैं यहाँ से कहूँ हफीज भाई आ जाऊँ,
No, not say aa jao to naam. To me, the best thing is like you judge by yourself as a player, as an individual, and then you call and pass that message to your partner, and then wait for the response. ठीक है. Sometime क्या होता है कि हम लोग अपना शॉट खेलते हैं और हम कहते हैं हम भागे हैं, हम कहते हैं कि यार सिंगल था तू भागा क्यों नहीं? Either we do mistake because when you judge, you have to wait for the response of your partner also. It cannot happen. The running between the wicket cannot happen only because of you. So you have to respect the call of your partner also. If he respond accordingly, then you run. Otherwise, you can stop yourself always rather than bringing into run out into play. So many times at the very early age, I used to do a lot of mistakes. तो जिनको भी मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे कैरियर के हवाले से ना दिखा देना, मैंने भी बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन व्हाई आई एम हियर फॉर, ताकि आप उन तमाम लोगों को जो भी सीखना चाहते हैं वो चीज को समझे कि एक तो आपने खुद जज करना है, दूसरा लाउड कॉल करनी है ताकि आप राइट मैसेज जल्दी अपने साथी को दे सकें, और तीसरा उसका रिस्पॉन्स जो है वो आपने देखना है. मैं फिर से कहूंगा प्रोड्यूसर साहब को एक मरतबा वो वीडियो दोबारा दिखा दें, क्योंकि विराट कोहली के उस 2 रन लेने के अंदर ये तीनों चीजें टच कर रही हैं. पहले तो उन्होंने शॉट खेल के जज किया, फिर उन्होंने जल्दी अपना जब कंप्लीट किया, और जब उन्होंने रिस्पांस अपने जो साथी का था वो देखा तो वो दूसरे रन के लिए भागे. उन्होंने इंतजार किया, क्योंकि अगर आप रिस्पांस नहीं आपका साथी दे रहा तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भाग जाऊं वो वहीं पे खड़ा रहे. जो हमारे केस में, पाकिस्तानी के केस में बहुत ज्यादा मरतबा हो गया है कि दोनों साथी एक ही क्रीज के अंदर रुक गए. हमने बहुत सी मरतबा देखा और बाद में बड़ी मीम्स चलते हैं उसके ऊपर. तो मुझे लगता है कि इस चीज को मैं यंगस्टर से डिस्कस करना चाहता हूं कि इस चीज को, इस क्लिप को अगर दोबारा प्रोड्यूसर साहब चला ये देखें, उन्होंने शॉट खेला, ही जज, ही कन्वेड दैट मैसेज टू, एंड देन ही स्टॉप हियर, और उसने उसका रिस्पॉन्स देखा, इधर ही इज रिस्पॉन्डिंग फॉर द 2 और नॉट. वंस ही न्यू देन ही रेन 2, अदरवाइज वो रुक सकता था. हम क्या करते हैं समटाइम, यहाँ पे देखें, he waited and he basically waited for his response, that is he coming or not, rather than touching and going and then all end up on a run out. But that can happen if you haven't batted often enough with someone. Understanding is, yeah. And then where the communication is not good. How do you manage that in a match situation where perhaps you're batting with someone for the first time? A clear message, a loud call works for everything. Because if you are not giving a right call and a clear sound to the your partner, because I'm talking about international cricket, a lot of noise out there, and if you don't make a right call, a loud call, the other person may miss that what you wanted to. But end of the day, it's all about your judgment, it's about your calling, it's about the response of your partner. And if there's these no three run, things sync together, yeah, everything works properly. If there's no run, you say wait. Yeah. Is that if there's a no run, like I wanted a run, my partner saying no, so I should stop straight away rather than rain and get a run out. So it's better if your partner is not responding accordingly, you can always say, okay, we will discuss later. Because sometimes what you do, you run and you waste a wicket. You give a chance to the opposition. So anything from the coaching point of view? No, Rashid bhai. कोचिंग ये एज ए प्लेयर थी, विराट कोहली को देखा, मैं सूर्य कुमार यादव को देख रहा था, क्योंकि डेंजर एरिया किसका था? उसका था. जब आप दोनों, पहला रन हमेशा जब लिया जाता है दोनों हाथ में बल्ला होता है, आप भागते हो, ठीक है ना. सेकंड रन जब आप लेते हो, जब आपने टच डाउन किया है यहाँ पे, तो एक हाथ में बैट होगा, तो सबसे फास्टेस्ट जो रनिंग बिटवीन द विकेट होती है वन हैंड से होती है, डोमिनेंट हैंड. जब आप रन आउट देखते हो, मोस्टली प्लेयर जब आउट होते हैं लीडिंग आर्म में बैट नहीं होता और यहाँ पे वो रन आउट हो जाते हैं, ठीक है. अगर राइट हैंड में होता है हमेशा स्ट्रेच ज्यादा होता है और इस पाउंड से आप पहुंच जाते हो. नैनो सेकंड का फर्क है सिर्फ. ये दोबारा दिखाइएगा, ये जरा दोबारा आ जाए जरा प्लीज. ये वीडियो बात की आपने कि डोमिनेंट हैंड. ये देखो आप सूर्य को देखें, सूर्य कुमार यादव को देखें, वन हैंड पे बैट है, ये स्प्रिंट मारी इसने यहाँ पे वन हैंड. जब दो से भागते हैं, ये करीब से दिखा रहे हैं यहाँ, वो दो से भागे पहले, ये एक हाथ में. इसमें बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे वीडियोस, डीन जोन्स है, जॉन्टी रोड्स है, मोइन खान है, धोनी है. पहला रन ऐसे लेते हैं, दूसरे वन हैंड में बैट होता है, डोमिनेंट हैंड में. तो आप जब पलटते हो ना, तो पलटते हुए रिस्पॉन्स होता है ना, तो यहाँ से आप ज़्यादा स्ट्रेच कर जाते हो. लेफ्ट हैंड में होता है तो आप स्लो भागते हो, फिर या दोनों हाथ में हो तो उसमें भी स्लो होता है. तो क्या है, बच्चों के लिए ये कि डोमिनेंट हैंड में सेकंड और थर्ड रन
हमेशा ऐसे ही बनता है। क्या बात है। एक थैंक यू सो मच। एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, जो पहला, अगर आप देखें जो पहला रन उसने लिया ना, तो वो पहला उसने जब बॉल खेला ना तो वो भागा तेज। उसने ये नहीं किया कि मैं मिड ऑफ पे बॉल जा रहा है तो मैं जॉग करूं, उसने पहले भागा एंड देन उसने देखा कि दो हो सकते हैं, दैट्स उसके पार्टनर ने रिस्पॉन्स दिया उसको और वो वापस आया। और इसमें जो राशिद भाई ने बात की कि जो आपका डोमिनेंट हैंड है वो नॉन स्ट्राइकर हैंड पे, अगर आप देखें विराट कोहली जो है ना लेफ्ट से उसने बॉल को देखा है, क्योंकि जहाँ पे बॉल होगी उसको देखना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। और रॉन्ग वे में टर्न नहीं ले सकते आप, क्योंकि आप अगर ब्लाइंड हो जाएंगे ना, आप बॉल नहीं देख रहे। अब मॉडर्न डे क्रिकेट में पहले ही होता था कि आपने इसको यूं करके तो देखना है फिर लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट में हो गया आप जब भाग रहे हैं तो उसी वक्त आपने देखना है कि फिर आपने देखना है कि वो उधर है, तो उसमें क्विक होते हैं। अगर आप जॉनी बेस्टो आई थिंक वन ऑफ द क्विकेस्ट रनर, अगर इसका देखें तो उसका इन्होंने हाँ जी उसका अगर देखें तो वो एक मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर उसको देखें वो बैटिंग कर रहा है यहाँ से और वो फ्लिक किया उसने बॉल और फाइन लेग के पास किया, ठीक है, और वो वहां से गया और वापस आया। जो फाइन लेग का फील्डर है क्लीन पिकअप करता है और वो 90 माइल पे थ्रो करता है और वो बॉल जो है, अगर मैं आपको यहाँ आऊँ, अगर वहां से थ्रो आई है और स्टंप्स पे यहाँ है और कीपर ने उसको ऐसे करना है, 90 माइल पे थ्रो होगी तो वो उसके रन आउट होने का चांस है, अगर 90 माइल से कम होगी 85 पे होगी तो वो दूसरा रन लेके भाग जाएगा आपसे। सही। वाह, that's a lot of in-depth conversation. Zulu, would you want to chip in a little? He stole my thunder, as I stole my thunder. Exactly that. Is that exactly what I was going to say? Is that you don't always turn with the bat in the same hand. Okay. If you are turning and the ball is here, your right hand, so that you've got a good. If it's in your left hand, now you have to. Yeah. You're turning, and that's when they. So which way? They talk about turning. Which way the ball is, then you turn that way. So you turn wherever the ball is. If the ball's out here, it allows you to turn much quicker and much easier. Because if I'm turning, if the ball is behind me, but I'm turning here, it's very difficult for me to turn. So eyes on the ball at all times. And it's always about those little 1%ers, especially with the cameras nowadays as well. And certainly for me, in my teams that I coach, you have to, if it's close, you dive. Yeah. Because you can make this much. You can make that much on a dive. Yeah. And quite often a lot of run-outs are that. So if you play in my team, I'm sorry, it's extra laundry, but you dive. You have to. And what about the 3 points I made? Your judgment, loud call, and response of the partner. And I want to add to that as well, is that sometimes if I'm batting here and the ball goes behind me, I now need to trust my non-striker to call. If the ball is in front, I've got the best view. It's generally my call. Okay. Because if the ball is going in front, generally, it's your call. And the throw is coming to my end. Yeah. Once the ball goes behind me, it's the non-striker now that's got the best view. The similar thing goes here also, because anything in front of me is my call. Yeah. Yes. And anything behind me is my partner's call. Yeah, wonderful. You see? Thank you so much. But this is good so there's something called trust in there as well. So, no matter you are a striker, no matter you are a striker or you are standing on a non-striker end, if anything in front of you, you have to make a call. You have to judge, you have to make a call and respond accordingly. And similar, if the ball is on my back, I have to trust my partner. Exactly. So Zulu, generally the throw, the fielding throw is coming when he's calling. It's coming here. Exactly. So I don't have to. Should get home quite easily. The ball is that side. It's coming to me. I hope young cricketers playing in the Pakistan Junior League are watching this, because these are the basics you need to get right as a young cricketer. A lot of people, yes, we talk about flair and we talk about the good shots you can play, but if you can start doing things like learning how to ground your bat, learning how to call properly, and these are the things you do, hey, one day you could end up playing for Pakistan. And then you'll say, I heard when Hafiz was chatting on TV, this is what he said, and it's the 3 things I picked up. And I think to be able to learn from the legends, I mean, I'm picking up so much, just sitting here thinking, I've commentated for many years. You're going to be in the next course then. Hey, you never know. But it's so important to get the basics right, and I think that's what we learned from this demonstration. Exactly. I think I'm in love with the show these days. ये तीनों ना चौके छक्के ही मारते थे, भागते तो कम ही थे. बस कोचिंग तो कर रहे हैं, कोचिंग तो कर रहे हैं ना. But having said that, मेरा ख्याल है जो उन्होंने बातें कही है वो इंशाल्लाह आपको उसका फायदा जरूर होगा. एक और भी मैंने सवाल पूछा था मासूमाना सा
क्योंकि ये गप लगना तो शुरू हो गई है, अब सब क्रिकेट फैंस यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से सेमीज में पहुंच सकता है. I mean, obviously, we do have our amazing guests all the way from South Africa, so I do not want to say that South Africa loses and then Pakistan comes to semi. I mean, I would want South Africa and Pakistan both to kind of qualify from the same group as well. You must be much more competitive. Yeah, seriously. I mean, obviously, that's how it needs to be. So, first up for you, how do you think Pakistan can make it to the semis? I'm not exactly sure, okay. But they can. Yeah. They can. So if they win all their matches? I think that's that's a simple given. thing for them. If they win 3 games, yeah. As a fan of cricket, as a Pakistani, I want to Pakistan to win the 3 games in a row. Yeah. Make a statement and make yourself available for the next round. If they don't win any, like all the 3 games, they don't deserve to be 100%. There. But just because Cass said it that, you know, we really need to be more competitive, I mean, and then you South Africa losing to lose. India. Yes, you do want South Africa to lose. You want if and but shouldn't work for us. But I mean, Hafiz makes a good point. He makes a good point. Firstly, take care of what you can do, and that is to win your games, right? Yeah. In the end, if you end up losing out because net run rate has kicked you out or South Africa have won their matches, it's a different story. If you come back to Pakistan saying, well, we didn't make it and we didn't win our games and the opening partnership is still not working, you have more issues. But you definitely want us to lose and we'll still be friends. I promise. Yeah, we are friends, obviously. But I mean, you don't want us to win because you need to get And remember, if Pakistan wins 3, South Africa has to lose from Pakistan. Exactly. You need to lose that. And I mean, we've got India obviously on Sunday. But Group 1 is getting so much more interesting because Sri Lanka against New Zealand tomorrow. We think New Zealand are the favourites. But our predictions, we've seen, I mean, Hafiz's predictions where that has gone. Absolutely. I mean, he's bad at prediction. That's what he's My prediction is always wrong. Yeah. But for tomorrow, first of all, ladies and gentlemen, let's take a look where the match will be taking place. So here we are, Cass. Why don't you take over? Yeah, New Zealand and Sri Lanka tomorrow. And the good news is the sun will be shining in Sydney, 0% chance of rain. And this is exactly what we need. I would like to say, and perhaps I'm going to get my prediction wrong, but I'd like to say that Sri Lanka are going to upset New Zealand and throw their hat in the pot to say semi-finals. I think I'm going to get it wrong. You need some company though, so I need to get a wrong prediction. I think I'll stand with you. You know, okay, let's go with Sri Lanka. Let's see what our superstars have to say over here. Please, by New Zealand or Sri Lanka? It's not a prediction, but by team, New Zealand is a far better team from Sri Lanka, and they have one of the very important game which has given them a lot of confidence when they played against Australia, and the game they played at Sydney, obviously. This game is also at Sydney. True. So I think New Zealand will be the favorite. All right, wonderful. Azhar bhai, what about you? यार छोड़ दो ना prediction. यार prediction ही कह रहे हैं. आप किस टीम को support कर रहे हैं? चलो ये बता दें. न्यूजीलैंड को. न्यूजीलैंड को. राशिद भाई? श्रीलंका. श्रीलंका. Yeah, we have another supporter. कुछ तो player है ना भी. We didn't discuss it beforehand. That's why. If it was in Colombo, I'd go with Sri Lanka. In Sydney, I'm going with New Zealand. All right. हमारी prediction के बाद वो अपना plan change कर देते हैं. So, ladies and gentlemen, over here from the studios of PTV Sports, we have 3 supporters for Sri Lanka and 3 for New Zealand. Let's see. I think tomorrow is a big game. You know, we certainly are excited for that one too as well. Inshallah, आप सबसे मुलाकात होगी सुबह के 11 बजे कल जब हम बात करेंगे प्री मैच पे कि कौन सी टीम कैसे ऑन पेपर तगड़ी है और क्या वाकई श्रीलंका अपने नाम कर सकेगा because me and Cass have actually decided to vouch for Sri Lanka all the way. That's it. And we will continue this conversation on Twitter, #GameOnHere. And remember, it's Follow Friday, so follow PTV Sports on Twitter. Exactly. Thank you very much. So it's about time, ladies and gentlemen. आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं. All right, तो आइए फिर सब चलते हैं. You're going to do the walk-off. You're the king, and maybe Hafiz is going to walk with you, and then we can clap. We're going to clap for you. All right, Hafiz, we're walking on a red carpet. Come on. Let's give the 3 of you. Go. Game on it.
Australia are the defending champions. We have to wait to see who wins the 8th edition of World T20 Cup. Goodbye, good night! Top teams of the world shall be competing. Fierce, unforgiving, up there to accept the challenge. Speed, the spinning wiles. Orthodox shots interspersed with massive hits. ICC World T20 2022, October 16th until November 13th, 2022. Live on PTV Sports HD. Game on hai. Presented by Banking इतनी simple. Wow! Download Zindagi app now. और पसीने के दागों की हर दीवार brought to you by इनके लिए तो नसीम शाह से आउट होने की सीधी सादी खुशी है लूंगा Nestle Fruta Vital Sparkling Fruit now in Apple. Support sponsors State Life Insurance Corporation of Pakistan. सूफी जो नाम है एतमाद का। मैं हूं शाहीन अफरीदी और मेरा बैंक है फैसल इस्लामी। फैसल इस्लामी, बढ़ो यकीन के साथ। 250 other network minutes सिर्फ 399 रुपए में पूरा हफ्ता। Zong 4G KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला मोटरसाइकिल टायर ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। खुश्की के जर्म्स पर असर 100% तक। खुश्की मिटाए, कंधे से बोझ हटा दे। With new Plesso Bleach Cream, पाव सितारों जैसी ग्लो। डायमंड टायर, पाकिस्तान का सबसे मजबूत टायर। और किसी पे नजर क्यों जाए? केयर हनी लोशन। जो कैनन इलेक्ट्रिक वाटर हीटर लगाते हैं वो बांटने से नहीं घबराते हैं। नेमत कुकिंग ऑयल से बना हर खाना है अपनायत और किसायत से भरा। ओमेगा रेजिडेंशियल झंग जल्द आ रहा है। ऐसे टैलेंट को बढ़ाने में साथ दे रहे हैं हम थ्रू द एंग्रो क्रिकेट कोचिंग प्रोजेक्ट। गेम ऑन है। Oh, boom, boom. Boom, boom. Oh, full toss. It might be a no ball, but it's four. Afridi fittingly hits the winning run. Shahid Afridi. Big man, big game. It's a leg by. Who cares? Handshakes all round. It's been a wonderful tournament. A fantastic tournament. And it's Pakistan. And yes, you might say fittingly win this 2020 World Cup. गेम ऑन है। गेम ऑन है।
things happening out there. Any one of 5, maybe 6 teams can win it. Oh, that's another 6. That is huge. They could field 4 spinners. Bowlers win your tournament. It is just raw ability and talent. That is some catch. Who's going to win? They are really the team to beat. Unbelievable. Game on है. Presented by Banking इतनी simple. Wow. Download Zindagi app now. और पसीने के दागों की हर दीवार. brought to you by इनके लिए तो नसीम शाह से आउट होने की सीधी सादी खुशी है सूबा. Nestle Fruta Vital Sparkling Fruit. Now in Apple. Support sponsors State Life Insurance Corporation of Pakistan. सूफी जो नाम है एतमाद का. मैं हूं शाहीन अफरीदी और मेरा बैंक है फैसल इस्लामी. फैसल इस्लामी, बढ़ो यकीन के साथ. 250 other network minutes. सिर्फ 399 रुपए में पूरा हफ्ता. Zong 4G. KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन. पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला मोटरसाइकिल टायर, ग्रिप सर्विस जैसी, तो फिक्र कैसी. खुश्की के जर्म्स पर असर 100% तक. खुश्की मिटाए, कंधे से बोझ हटा दे. With new Plesso Bleach Cream. पाव सितारों जैसी ग्लो. डायमंड टायर, पाकिस्तान का सबसे मजबूत टायर. और किसी पे नजर क्यों जाए? केयर हनी लोशन. जो कैनन इलेक्ट्रिक वाटर हीटर लगाते हैं वो बांटने से नहीं घबराते हैं. नेमत कुकिंग ऑयल से बना हर खाना है अपनायत और किसायत से भरा. ओमेगा रेजिडेंशियल जंग जल्द आ रहा है. ऐसे टैलेंट को बढ़ाने में साथ दे रहे हैं हम थ्रू द एंग्रो क्रिकेट कोचिंग प्रोजेक्ट. गेम ऑन है. This is an absolutely massive edition of AEW Dark Elevation, and we're kicking it off with a huge 10-man tag team match. There's your favorite, Paul. Absolutely. This is a 10-man tag team match, number 1 fall with a 20-minute time limit. Approaching the ring first, the team of Bulk Nasty, Tito Oric, Jake Omen, RC Dupree, and Luther. Seems like Luther has picked up some strays walking the streets of Pittsburgh. Well, you know, I said on Elevation before that doing my research on the amazing Luther, that's what I'll refer to him as, he actually comes from Danish royalty. So these could be subjects of his kingdom. Wow. And the amazing Luther was actually his name when he was part of the Trapeze Act. Join the Dark Order. And their opponents, Stu Grayson, Evil Uno, Alan 5 Angels, number 10, and Alex Reynolds, Dark Order. That's one impressive group right there, Dark Order. One of AEW's all-time favorite groups. They roll together. They are a squad. And Mark, it's always a lot of pressure when the boss is watching you from ringside. Talking about -1, of course. -1, of course. -1 came out, and he was gone as fast as he came out. Well, it is a school night. It is a school night. If they were smart, they'd bribe them some candy so they, they can keep their jobs. Is that how they keep their jobs? They bribe him with... That's what I did to my kids on my show. I always had candy for them. Well, nonetheless, Dark Order.
in action tonight against Luther and his motley crew. Yes, I wonder who's going to start this thing. You know, I think I'm going to start calling Luther King Luther. King Luther. He comes from royalty. I'm not lying. That means he would be a duke. No, he comes from King. Luther here has a Serpentico mask, and it's... Oh, he's excited now. Boy, that mask just points Luther up. Starting. And Stu Grayson just running over this Ursat Serpentico. Yeah, I think Stu Grayson took that as a target. Stu Grayson even a little bit perplexed by the antics of Luther. Oh, here comes Big Boss Man. The more I watch Luther, I'm telling you, Luther, you're going to find out years from now, is probably a genius and one of the smartest minds to ever wear a pair of wrestling boots. Not only Danish royalty, but a genius as well. But a genius. I mean, this guy, he's got layers like an onion. Like him so much? He's got layers like an onion. Leapfrog by Grayson Allen. Oh, right into the eye post from Evil Uno. And Uno, the hanging neck breaker. He earns that moniker, doesn't he? Evil Uno. Uno. That was awful evil. Uno coming in on the blind tag. And now. No pun intended? No pun intended at all. And Reynolds comes in, running back elbow in the corner. He gets more intense every week. Alex Reynolds doesn't have an off button, Mark. He doesn't have an off button. Tito Orrick getting taken down by Reynolds and making the tag out to Luther. Reynolds avoids the high kick. Luther, though, reverses Reynolds into the ropes, throws the back elbow, throws the lariat, but lands the leg lariat. Big collision there. That was the royal leg lariat. King Luther. Oh, hell. King Luther. Snap suplex into a lateral press. He needs to stop arguing with the referee and handle the guy in the ring with him. Or might get somebody to talk for him. Jake Omen tagged in. That didn't work. Reynolds able to roll out of the way. I don't think he knew that was coming. But Reynolds, the upkick, backs Luther into the corner. Makes the tag to Big Vance, number 10 of the Dark Order. What a powerhouse. And Luther throws Jake Omen into 10, and 10 just running everybody over. He's just such a powerhouse. I love watching 10 work. Look at 10. Now he's got Bulk Nasty. Oh, talk about nasty. Bulk Nasty went for a ride. Luther wants no part of it. Luther. I guess all the other wrestling names were taken, and he got stuck with Buck Nasty. I don't know, man. That's not a name that's going to earn a lot of tips. Uh-oh. Alan Angels, Tope Suicida through the second and third rope, collides with Luther, and now Reynolds up, and the moonsault onto Nasty, onto Orrick. And now Jake Omen gets a spine buster for his troubles. What an impressive athlete 10 is. Wow. 10 makes the tag out to Evil Uno, and